Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. What's up everyone? Welcome to another episode of Tube for You. My name is Arpit. क्या हाल है आप सब लोग के? I hope you all are doing great. Because आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब दे देगा. एंड इस वीडियो देखने के बाद ट्रस्ट मी, आपका जो एक डाउट है अबाउट एन IPO, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मुझसे सवाल पूछ सकते हो. मैं उन सवालों के जवाब आपको बेहद खूबसूरती से देने की पूरी कोशिश करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड. आपने सबने टाइटल पढ़ ही लिया है, शुड वी इन्वेस्ट इन एन IPO. क्या हमें IPO में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इन्वेस्टर को, हर एक जिसको बोले ना कि अभी जिसने मार्केट में अपना अकाउंट खोला है, शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खोला है, डीमैट अकाउंट खोला है, ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, हु इज राइट नाउ वेरी राइट एंड ऑल ऑफ ए सडन एक IPO आ जाता है, तो ही और शी स्टार्ट्स आस्किंग देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या मुझे IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? इज दिस कंपनी गुड? क्या ये मेरे को बहुत सारे रिटर्न्स देगी इन द फ्यूचर? कि मैं IPO में इन्वेस्ट ना करके लिस्टिंग वाले दिन पे उसमें काम करूं, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आते हैं. तो आज मैं उन सवालों का आपको जवाब देने जा रहा हूँ. स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो देखिएगा बिकॉज इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. तो गाइस, जैसे कि हमारा टॉपिक है, इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट इन एन IPO? वेल लेट मी टेल यू, वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन IPO. IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ये वो समय होता है जब एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है और वो अपने शेयर्स एक कॉमन मैन को खरीदने का मौका देती है. सो दे स्टार्ट विद एन IPO. लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि इट इज़ बेसिकली अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करूं तो IPO में कुछ लोगों को जिन्होंने बेहद बेहतरीन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है, उनके तो पैसे 4 गुना क्या 40 गुना हो चुके हैं. 40 टाइम्स का रिटर्न मिल चुका है उनको. लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि द IPO रिलीज बिकम्स अ फेलियर, इट बिकम्स अ डड एंड द इन्वेस्टर्स जिन्होंने IPO में पैसा लगाया होता है उनकी कीमत भी वसूल नहीं हो पाती है एंड दे बेसिकली लूज मनी. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स कि किस तरीके से कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने एक बहुत फन फैक्ट बताऊंगा कि अगर आपने एक कंपनी में पैसा लगाया होता था उस समय जब उसका IPO रिलीज हुआ था और आज की तारीख तक भी वो पैसे रखे होते थे, तो गेस कीजिए वो कितने की वैल्यू होती उसकी. इन द स्टॉक मार्केट ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस दिन कंपनी का फॉर्म निकले यानी कि IPO निकले, वो फॉर्म भर के भूल जाओ. ये चीज़ आपने डेफिनेटली सुनी होगी. क्यों ना? क्योंकि हमारी एक इंडियन मेंटालिटी जो है दैट इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एंड सेविंग एंड सेविंग. बट बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल हैव बिकम मल्टी मिलियनियर्स. लेकिन कुछ लोगों का इस चीज़ के अंदर नुकसान भी बहुत हुआ है. तो चलिए मैं अभी आपको एक चार्ट के द्वारा समझाता हूँ कि किस तरीके से अगर आपने पैसा विप्रो में लगाया होता था 1980s में जब उसका IPO रिलीज हुआ था, तो उस समय का 10,000 रुपया आज की कितनी वैल्यू रखता है. लेट्स स्टडी दैट. So as you can see on the screen, I have prepared a chart where it says the WIPRO investment growth. The WIPRO IPO was released in the year 1980. The initial investment for 100 number of shares with the face value 100 was obviously 10,000 rupees. In 81, it did a 1-to-1 bonus. So obviously your 100 shares became 200. 85, 4 years later, it again did a 1-to-1 bonus. So your number of shares became 400. In 1986, the stock split to a face value of 10 rupees. So obviously the number of shares were now 4,000. In 87, another 1-to-1 bonus making an 8,000 tally. 89, 1-to-1 bonus, 16,000 shares. 92, 1:1 bonus, 32,000 shares. 1995, 1:1 bonus, 64,000 shares. 97, they gave a 2:1 bonus. Wow! It became 192,000 shares. In 1999, the stock split again to a face value of rupees 2 and then it became 960,000 shares. In 2004, again the company gave a 2:1 bonus with leading it to a tally of
28,80,000 shares. Almost you can say 2.88 million shares. 2005 was 1:1 bonus, so it became 5.76 million shares. 2010 2:3 bonus, it became 9.6 million shares, and then 2017 1:1 bonus, it became 19.2 million shares. Now let's calculate the actual value of WIPRO. Now at the moment the stock is trading anywhere between 350 to 380 rupees. If I am to consider 2017 prices, they were anywhere between 383 rupees. On a safer side, I would calculate as 380 rupees. So 380 multiplied by 192,000,000, that is 19.2 million shares, and the answer is 729 crore rupees. Yes. Oh my god, mind blown away, isn't it? मतलब forget investments of, say for example, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बात हो रही है. इट इज लाइक hundreds of crores, 700 worth of crores man. मतलब नहीं सोच सकते. लेकिन यहाँ पे कैच आता है. 1980 में कितने लोगों को पता था कि जो विप्रो उस टाइम पे आईपीओ निकालेगी, आज विप्रो बन जाएगी. See, this is one thing, this is one chance that you need to take. आपको कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी नहीं, बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए. बिकॉज होता कैसा है, जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था अबाउट द चार्ट्स, द कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ऑल. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो यहाँ पे किधर आई बटन आएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो उस वीडियो को, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ टू स्टडी द कैंडल्स एंड द कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अगर आपकी कोई कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो आप उसका प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट निकाल सकते हैं, चार्ट डेटा निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. बट इन एन आईपीओ सिचुएशन, कंपनी तो अभी जाके लिस्ट हो रही है, तो कंपनी का कोई चार्ट मौजूद नहीं होता. देयर इज नो हिस्टोरिकल डेटा एज सच दैट इज अवेलेबल फॉर अ यूजर और एन एंड यूजर और एन इन्वेस्टर फॉर दैट मैटर. लेकिन देयर इज स्टिल plenty of data that is available, because in the IPO form issue, the company itself in their brochure mentions what all they have done, what all is the company all about. उनके डायरेक्टर्स के नाम बताए जाते हैं, उनकी कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिटेल दी जाती है. सो यू माय डियर फ्रेंड कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कंपनी का मोल भाव लगा के कितना सही बैठ रहा है हिसाब किताब. शुड वी रियली इन्वेस्ट इन दैट IPO और शुड वी नॉट? एंड नेवर बी इमोशनल. किसी के कहे में आके आपने पैसे नहीं लगाने हैं आईपीओ के अंदर. ओनली इफ योर माइंड सेज इट्स राइट, यस आई नीड टू इन्वेस्ट. अगर आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही हैं एंड यू आर फीलिंग दैट दिस कंपनी होल्ड्स द पोटेंशियल टू बी समवन इन द नेक्स्ट 5 years, 10 years, 20 years और इवन 30 years फॉर दैट मैटर, आप इस चीज में पैसा बिल्कुल लगा सकते हैं. एक सबसे बड़ी मिथ मैं आज आपके लिए क्लियर करने जा रहा हूँ. बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जो आते हैं मार्केट में, उन्हें यही लगता है कि यार आईपीओ वाले दिन जो रेट है उससे नीचे ये चीज़ नहीं जा सकती. मीन्स दे फील, आई नो इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट, बट मैनी पीपल, ट्रस्ट मी, इन माई एक्सपीरियंस मैनी पीपल कम अक्रॉस दिस डिलेमा कि अगर मान लो 300 रुपये का रेट है, इफ 300 इज द प्राइस एट विच द आईपीओ ओपन्स, दे फील दिस इज द लोएस्ट दैट इट विल एवर गो. ऐसा नहीं होता है. आई विल बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इन फैक्ट, following is the chart which will be showing you all the details about those IPOs which turned out to be a failure. Check this out. The biggest crashes, IPOs since 2008 in which investors have lost the most. Gammon infrastructure projects. It was issued at a price of 167 rupees and the last traded price was just 70 paise. You can understand it is minus 99.6%. The value, the capital is wiped off. KSK Energy Ventures, 240 it was the issue price, last traded price 1.1 rupee. Reliance Power, R Power, oh my goodness, 450 rupees was the issue price, last traded 7.6. JP Infrastructure Limited, 102 was the issue price, currently trading at 2 rupees and 2 paise. Sad.
Shriram EPC Limited, 300 rupees was the issue price, 9.7 was the last trading price, and DB Realty Limited, 468, and last traded price was 16 rupees. Now all these prices, the last traded price, I've calculated as per say the last year. I'm not considering 2020 into it, I'm considering 2019. So these were the average prices at which these stocks were trading. My God, people have lost lakhs and lakhs of money in IPO. तो देख लिया आपने. This thing is always not a rosy picture. It can be a bloodbath also sometimes. IPO में इन्वेस्ट करना इसलिए बोला जाता है कि आपको मार्केट के जोखिम और नियम अनुसार आपको करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके अंदर, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. आफ्टर ऑल इट्स योर मनी. You need to make sure that rather than losing it, you at least retain it. And IPO is definitely great. My suggestion would be always and always invest in an IPO if the company is really good. See, there are many other manufacturing sectors, there are many different varied spectrums in how the market is positioned. There's this pharma sector, there's the IT sector, auto sector, energy sector. All these are widespread. If a company comes from a particular sector, you need to understand currently, is that sector performing well? Is the company really good? Can this company make a difference in that particular sector? If it does, tick mark, go, apply it. But if it not, hold your horses. You will get that for a much lower price in the near future. So not necessarily you need to apply for an IPO. So I hope I made myself very clear. And with that said, I would also like to give you an idea about how the wonderful angel broking application works on the mobile platform. You can easily download it from the App Store or the Play Store. It works seamlessly with all the smartphones and is one of the fastest and the easiest loading applications out there. You can track your live charts, you can track your actual portfolio value, you can buy sell stocks with just a click of a button. That's the beauty of the angel broking app. So make sure you check that out, and also clicking on the link in the description below, you can open your trading account in just 5 minutes. Absolutely true, 5 minutes only. And more importantly, there's zero brokerage on the iTrade Prime plan. So I'm giving all the links in the description below. Make sure आप check करें, click करें, and just follow the basic next steps and upload your PAN card copy, Aadhaar card copy, and voila, you're good to go. So with that said, I really hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, because यार चीज़ तो है, कितने माइंड ब्लोइंग फन फैक्ट्स मैंने आपको बताए अबाउट विप्रो एंड ऑल दी अदर IPOs. ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट सही IPO पे लगाई, सही कंपनी को देखकर उस पर पैसे लगाए, सो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन यू विल मेक मनी, बिकॉज पुटिंग योर मनी इन एन IPO और बाइंग अ शेयर फ्रॉम फॉर एनी अदर कंपनी, यू आर बेसिकली परचेजिंग पार्टनरशिप. आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं. तो यार अपना पैसा है, सोच समझ के डालिए. बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, and always before taking a trade, consult your financial advisor, because आप किसी की भी बात सुन के अपने पैसे लगा देंगे, उसके बाद आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So that's my humble advice to you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, so make sure you hit that like button. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है, make sure you hit that. Otherwise, you will not be notified about the videos. That's it for now. This is Arpit Handa signing off. मिलता हूँ आपसे आने ही वाले किसी ऐसे रोमांचक एपिसोड में जिसके अंदर आपके मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर मार्केट के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख सकूँ. So take good care of yourself and always remember, I love you all. Bye bye.